Hello everyone, welcome back to our lecture series of complex analysis. We were discussing sequence and series of complex numbers. हमने previous lecture में series और sequence से related कुछ important concepts को discuss किया. In this lecture, we are going to discuss a theorem given by Taylor's, and that theorem itself gives us the Taylor series representation of an analytic function. जब भी किसी गिवन डिस्क में अगर फंक्शन एनालिटिक है तब हमेशा हम उस फंक्शन का टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं. ओके, सो let us start this lecture by writing the statement of Taylor's theorem, and that Taylor's theorem will give us the series representation of an analytic function, and that series representation is nothing but the Taylor series of that function. Okay, so let us start by writing the statement of theorem, and that theorem is about Taylor's theorem. Okay, and moreover this particular theorem gave us the expansion of a function fz, this is analytic, into a Taylor series about a point z naught. Okay, so this is what this theorem is going to discuss. So theorem says, suppose that a function f is analytic throughout a disk. That disk is given by z minus z naught is less than r naught, centered at z naught and with radius r naught. Okay, then with this supposition we are having this particular or a beautiful representation of fz. Then fz has the power series representation f of z, that is f of z is equal to summation that n is running from 0 to infinity a n z minus z naught to the power n, where of course z minus z naught is less than r naught, where that coefficient a n can be given as the nth order derivative at z naught of our n factorial, and of course this n is going to be 0, 1, 2 and so on. Okay, ये जो सीरीज है, क्योंकि सीरीज तो कन्वर्स भी हो सकती है और डाइवर्स भी हो सकती है, सो व्हाट वी आर इंक्लूडिंग that is series, let me call this series is series number 1. Okay, that series 1 converges to fz when that z lies in the open disk. Which open disk? Mod of z minus z naught is less than r naught. Okay, so let us discuss the series first. हमने हमेशा सीरीज को डिस्कस किया, उसके कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस को डिस्कस किया. ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है वो एक पावर सीरीज का फॉर्म है. तो थ्योरम क्या कहती है कि दिस इज पावर सीरीज इज गोइंग टू बी कन्वर्ट्स टू अ फंक्शन एफ जेड. अब एफ जेड का वैल्यू कहाँ पर हमने आइडेंटिफाई किया है? This z is such that mod of z minus z naught is less than r naught. That is,
जेड नोट पे सेंटर्ड किसी ओपन डिस्क में ये जेड उसके इंटीरियर पॉइंट की फॉर्म में है. So we are saying that this power series converges to this function fz. Okay. अब यहाँ पर ये जो a n है that is given by nth order derivative at z naught. Again this z naught is center. So what we are doing here कि हम फंक्शन में जैसे मान लेते हैं हमारे पास अगर ये डिस्क है, सपोज दिस इज आवर ओपन डिस्क एंड दिस इज आवर सेंटर z नॉट. ओके, तो z पॉइंट है वो कहीं पर यहाँ पर हो सकता है, सपोज दिस इज आवर z पॉइंट, और ये जो डिस्टेंस है वो r नॉट डिस्टेंस है. तो हम ये कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर, इस डिस्क के किसी भी पॉइंट पर हम फंक्शन की वैल्यू को इस पर सेंटर्ड एक पावर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. एंड देयर दीज कोफिशिएंट आर द nth ऑर्डर डेरिवेटिव एट सेंटर. तो हमने ऐसा ही कंसेप्ट कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला में पढ़ा था कि हम किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट के थ्रू बाकी सारे पॉइंट्स पर हम वैल्यू आइडेंटिफाई कर रहे हैं. ओके, तो हम इसको प्रूव करने के लिए कॉशी इंटीग्रल फॉर्मूला का यूज करेंगे ही करेंगे. ओके, सो दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ टेलर्स थ्योरम एंड वी विल प्रूव दिस स्टेटमेंट. सो इस तरीके का भी हमारे पास सिनेरियो है एंड लेट मी कॉल दैट दिस इज आवर कॉम्प्लेक्स प्लेन. ओके, वैसे तो हमें अलग से बनाना था बट ओके दैट इज ऑल्सो ओके. एंड सपोज दिस इज आवर रेडियस आर नॉट. ओके, and somewhere we are having a point z. So this is the scenario right now we are having. This green जो भी आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है that green structure is open disk. This z minus z naught is less than r naught. This is given by this. Okay, जब हम लिखते हैं open इसका मतलब ये बाउंड्री के पॉइंट्स इसमें इंक्लूड नहीं है. ठीक है, so this is about the Taylor's theorem and there are some other aspect of this theorem as well कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि जब n इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पर हमें 0 ऑर्डर डेरिवेटिव मिलेगा और यहाँ पर 0 फैक्टोरियल मिलेगा. तो हम ये सपोजिशन ले रहे हैं कि किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन नहीं करने का मतलब है कि उसी फंक्शन को यूज़ करना, और 0 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 1. तो अगर हम ये जो एक कॉम्पैक्ट फॉर्म है इसी को एक्सपैंड करके लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, on taking the 0th order derivative at z naught is same as the value of the function at z naught and that 0 factorial is equal to 1. that 1 can be, तो जो भी हमें सीरीज गिवन है, then 1 can be written as I'm just expanding that series. Okay, so we are having f of z. फर्स्ट हम 0 ऑर्डर का डेरिवेटिव लिखेंगे, फिर हम फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और फर्स्ट पावर. so this is first order derivative with 1 factorial. Okay, and then the first power z minus z naught plus second order derivative at z naught over 2 factorial. So we are able to write 2 factorial, then here z minus z naught square, so factorial and then square and then double derivative. Okay, then at last this thing is going to be at infinite. Okay, you can choose any value of n. हमने जैसे यहाँ पर 1 2 3 के लिए लिखा है वैसे ही हम आगे 3 4 5 6 7 अप टू n फैक्टोरियल तक हम अप टू इन्फिनिटी तक हम लोग लिख सकते हैं. ठीक है, अभी कुछ बातें जो हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए वो क्या है, देखिए. फर्स्ट इज कोई भी फंक्शन हो, एनी फंक्शन विच इज analytic at a point z naught must have a Taylor series about z naught. कैसे? मान लेते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन है f वो z नॉट पर एनालिटिक है. हमने कहा फंक्शन का एनालिटिक होने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पर हमें एक ऐसा नेबरहुड मिलेगा जिसके हर एक पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल है.
इसका मतलब क्या हुआ कि इस z नॉट के किसी न किसी नेबरहुड में फंक्शन हर एक पॉइंट पर एनालिटिक है। जब ऐसा है तब हम हमारे लिए जो भी नेबरहुड बन रहा है दैट विल प्रोवाइड अस दैट ओपन डिस्क जो कि हमें टेलर सीरीज या टेलर थ्योरम को लिखने के लिए रिक्वायरमेंट है। जैसे टेलर थ्योरम में क्या कहा गया है कि हमारा फंक्शन इस तरीके के डोमेन में एनालिटिक होना चाहिए। हमने कहा वेन एवर द फंक्शन इज एनालिटिक थ्रू आउट ओपन डिस्क, इस तरीके की डिस्क में अब हमें केवल डिस्क पर फंक्शन की एनालिटिसिटी चाहिए। तो हमने कहा कि जैसे ही हमारा फंक्शन इस पॉइंट z नॉट पर एनालिटिक हुआ, सपोज दिस इज आवर z नॉट पॉइंट, तो इसके लिए हमें एक ऐसा नेबरहुड जरूर मिलेगा, ओके, जिस नेबरहुड के हर एक पॉइंट पर फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है या फिर फंक्शन हर पॉइंट पर एनालिटिक है। तो सपोज मान लेते हैं ये जो नेबरहुड है वो हम इससे दे रहे हैं। नाउ वी कैन चूज दिस एप्सिलॉन एज आर नोट एंड फॉर दिस ओपन डिस्क वी कैन गिव द टेलर थ्योरम। ओके, सो दी सिंपल स्टेटमेंट इज कि जब भी फंक्शन किसी पॉइंट पर एनालिटिक है तो उसके लिए हमेशा हम एक टेलर सीरीज रिप्रेजेंटेशन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है।